Very common question for class 9 and 10 students for your board exam. If I give you two numbers, let's say 2 and 3, and I ask you to find out one in between rational number, easily you can find out 2 plus 3 by 2, that is 2.5. But if I give you two rational numbers, 2 by 7 and 5 by 7, and I ask you to find out 10 rational numbers in between, 100 rational numbers in between, can you do that? Yes, stay tuned. That is what I am going to discuss in today's session. I will give you very simple trick to find out the solution for this kind of question. Very simple trick. Just stay tuned till the end of this video. Hi, Devashish here from Debs Learning Hub, my YouTube channel Debs Learning Hub and my Facebook page to Debs Learning Hub. So, there are different scenarios. Let's say there are two numbers, 2 and 3. If you are asked to find out 9 rational numbers in between, you can easily do that. 2.1, 2.2, 2.3, and you can convert it into P by Q form. 2.1 का मतलब क्या होता है? 21 by 10. 2.2 का मतलब क्या होता है? 22 by 10. That is, you can make it least fraction 11 by 5. So that's how you can do it till 2.9. लेकिन इंटीजर नहीं. अगर आपको दे रहा हूं दोनों ही फ्रैक्शन in P by Q form, it could be negative, it could be positive. So let's discuss the positive integers first. Two given positive fractions or two given any positive number and find out the rational number. क्या करना पड़ेगा आपको? Okay, let's say there are two given rational numbers 2 by 5 and 4 by 5. It is in P by Q form. आपको पूछ रहा है जो फिगर आउट 10 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन, मतलब ये दो नंबर का बीच में 10 रैशनल नंबर, मतलब P by Q फॉर्म में 10 रैशनल नंबर यू नीड टू फाइंड आउट. क्या करना पड़ेगा? ट्रिक्स है जो आपको देखना पड़ेगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं. यहां पे हम लोग देख रहे हैं P by Q फॉर्म में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 5, राइट. कितना रैशनल नंबर बोल रहे हैं निकालने के लिए? 10 रैशनल नंबर बोल रहे हैं. मान लो ये 10 का मतलब है n equals to 10. n equals to 10. This is given. You are supposed to figure out 10 rational numbers in between. तो आपको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए यहां पे दो नंबर है 2 by 5 and 3 by 5, और आपको बोल रहे हैं ये दो नंबर का बीच में 3 रैशनल नंबर निकाल लो. सो 3 रैशनल नंबर 1 2 3, ये तीनों रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग ये बाउंड्री जो है, आपको याद है अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है, वेयर यू विल सी ऑलवेज टू फिगर आउट टू लोकेट रैशनल नंबर और नंबर लाइन, यू नीड टू फाइंड आउट द बाउंड्री, लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री, एंड देन यू नीड टू डिवाइड द एरिया इन बिटवीन, राइट. तो यहां पे जो दो बाउंड्री नंबर है 2 by 5 and 3 by 5, इन बिटवीन 3 रैशनल नंबर आपको निकालने के लिए बोल रहा है. उसका मतलब ये लाइन को आपको इन बिटवीन यू नीड टू डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, 1 2 3 and 4. तो 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, उसका बाद ही ना तीनों रैशनल नंबर निकल सकते हैं. तो वही हम लोग कर रहे हैं. जो यहाँ पे अगर बोल रहे हैं जो n equals to 10 मतलब 10 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहे हैं, उसका मतलब व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड आउट n plus 1. So n plus 1 that is equals to 11. What is this 11? ये 11 का मतलब है ये in between लाइन जो है इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा into 11 इक्वल पार्ट्स. Got it? तो 11 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, उसका बाद ही ना आप इन बिटवीन 10 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो. तो यहां पे इसीलिए 2 by 5 इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करते हैं? जो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर, इट रिटर्न्स द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 into 11 by 5 into 11, इसका मतलब है 22 by 55. दिस इज द लोअर बाउंड्री, राइट. अपर बाउंड्री जो है 4 by 5. 4 by 5 इज ग्रेटर देन 2 by 5. 4 by 5 में भी हम लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा, 4 into 11 by 5 into 11, इसका मतलब 44 by 55, राइट. तो नाउ if you need to figure out 10 rational numbers in between this 22 by 55,
एंड 44 by 55, कुछ प्रॉब्लम ही है नहीं, तो कैसे निकाल सकते हो? 23 by 55, 24 by 55, ऐसा करके आप लोग 10 रैशनल नंबर आराम से निकाल सकते हो. Now let's say you need to figure out 10 rational numbers in between rational numbers between 2/3 and 1/5. लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन आप लोग जो क्लास 6, 7, 8 में देखा है, कैसे हम लोग देखते हैं, जो दो नंबर फ्रैक्शन है तो ये दोनों नंबर में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को हम लोग जब अरेंज करते हैं, एंड व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर, राइट, व्हाट यू डू, always you make the denominators equal first, then only you can compare between two fractions, right? तो आपको ये डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो you need to find out the LCM. So you need to find out the equivalent fraction. So what is the LCM of 3 and 5? That is 15. So what you need to do, you need to make 15 the denominator, right? 2 by 3 equals to, you can write down 2 into 5 by 3 into 5, that is what, 10 by 15. So LCM is, you need to figure out the LCM of denominator, that is LCM is here, it is 15. Now 1/5 equals to, if we multiply with 3 both numerator and denominator to make the denominator equal, that is the 15, then it is actually 3 by 15. So lower boundary is 3 by 15, upper boundary is 10 by 15. You need to figure out 10 rational numbers in between. Now since both the denominators they are equal here, both the denominators are equal, 15, here also it is 15. Now you need to multiply both numerator and denominator with this n plus 1 11, because n equals to 10, right? तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, then again you need to multiply 10 into 11 by 15 into 11, that is 110 by 165. Another is 3 by 15, right? So 3 into 11 by 15 into 11, that is equals to 33 by 165. Now you just figure out the numbers in between. 33 by 165, that is the lower boundary. Upper boundary is 110 by 165. So 34 by 165, 35 by 165. There are so many rational numbers in between. You can figure it out. Got it? So LCM of 5 and 8 is 40. Now you need to make denominator equal 40 for both the fractions. So 3 by 8 means 15 by 40. 2 by 5 means 16 by 40. So what you need to do now? You need to add these two numbers and divide by 2, right? So 15 plus 6, both the denominators are equal. So 15 by 40 plus 16 by 40, that means 31 by 40. Make it half, 31 by 80. Okay. So in between rational number is 31 by, so it is 15 by 40 plus 16 by 40 divided, whole divided by 2, that is equals to 31 by 80. So this is what were in between numbers. So you don't need to follow this step number 2 and step number 3 here if you are asked to find out just one rational number in between. लेकिन इसका denominator equal करना ही पड़ेगा. That is the point number 1. That is the most crucial step. Got it? Look at this problem. Find out 4 rational numbers between 3 by 7 and 5 by 7. Step number 1. Do you need this step? Make the denominators equal if it is not so. So denominators are already equal. So you don't need to go by this step. Don't require.
Second step, check the number in between rational numbers, right? So here n equals to 4. Let's assume n equals to 4. So n equals to 4 मतलब कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा? n plus 1. So n plus 1 equals to 5. So now you need to multiply both numerator and denominator p and q with 5. So multiply both numerator and denominator with this n plus 1 5. So 3 by 7 it is equals to 15 by 35. 5 by 7 that is equals to 25 by 35. Now you figure out 4 rational numbers in between. 16 by 35, 17 by 35, 18 by 35, 19 by 35. There are multiple rational numbers. Even it is 9 rational numbers you can find out here. So here it is n plus 1 equals to 5. You have multiplied. So step number 1 is the first point you need to. This is very methodical. Number 1, make the denominators equal. If it is not so, here it is equal. So not required. Step number 1. Step number 2, number n is n equals to number of in between rational numbers, that is equals to 4 here. Number 3, step number 3, multiply both numerator p and denominator q with n plus 1. So n plus 1 5. We have multiplied both p and q with this n plus 1 5 in this problem, right? उसका बाद ये in between जितना rational number हो रहा है इसको निकाल लो. Very simple, right? Now I will show you one problem where you have the sign different. One number has lower boundary or upper boundary, any of these two has negative number, another one is the positive number. Okay, here this problem, find out 10 rational numbers between minus 5 by 13 and 6 by 13. Sometimes you need to apply your sense also. Always don't go by methods from the beginning. यहाँ पे साइन डिफरेंट है, माइनस 5 by 13 एंड 6 by 13. ये दोनों का डिनोमिनेटर भी इक्वल है, मतलब यू कैन कंपेयर, राइट? तो स्टेप नंबर 1 का जरूरत है नहीं. लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर इन बिटवीन रैशनल नंबर n एंड देन n plus 1 एंड मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसका जरूरत है क्या? इसका जरूरत क्यों पड़ता है? इसका जरूरत इसीलिए पड़ता है जो लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री, ये दोनों का गैप, बीच में गैप एकदम कम है, लेकिन आपको बोल रहा है बहुत ज्यादा नंबर निकलने के लिए, तब तो आपको n plus 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट गैप ज्यादा है, मतलब यहाँ पे माइनस 5 by 13 एंड 6 by 13. So my 10 rational numbers in between. So you are traveling from minus 5, that is the lower boundary, minus 5 by 13, and 6 by 13 is the upper boundary. So minus 5 by 13, next number is, if you are greater number, 4 by 13, minus 4 by 13, then minus 3 by 13, then minus 2 by 13. So that's how if you come, then within 6 by 13, already you will have 10 rational numbers. So ये दो स्टेप का जरूरत है ही नहीं यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो, so minus 5 by 13, next number minus 4 by 13, this is less than minus 3 by 13, this is less than minus 2 by 13, next number minus 1 by 13, this is less than 0, this is less than 0 is less than 1 by 13, 1 by 13 less than 2 by 13, 2 by 13 is less than 3 by 13, 3 by 13 is less than 4 by 13, 4 by 13 is less than 5 by 13. So मतलब यहाँ पे 10 नंबर जो बोल रहे, ये दोनों का नंबर का बीच में ऑलरेडी वो गैप है. अगर वो गैप नहीं होता, अगर यहाँ पे आपको बोलता था जो 100 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट, देन 100 तो ऐसा है ही नहीं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा उस टाइम पे. और जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं n एंड देन n plus 1 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जहां पे गैप बहुत कम है, मतलब हम लोग को इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट द इन बिटवीन नंबर्स. यहाँ पे तो स्ट्रेट अवे यू कैन फाइंड आउट, वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई ऑल दिस थिंग्स. मेन पर्पस इज टू मेक बोथ द नंबर्स comparable by having the same denominator, that is point number 1. And point number 2, this n and n plus 1, figuring out these numbers, n and n plus 1, this is because of to stretch the area in between the lower boundary and upper boundary, right? तो यहाँ पे आप देख रहे हो 100 पार्ट से डिवाइड करने के लिए बोलेगा, तो आपको नॉट नेसेसरली यू नीड टू मल्टीप्लाई with n plus 1, that is 100 plus 1 equals to 101. You can multiply straight away with
100. So minus 500 by 1300, right? And then 600 by 1300. So minus 500 से 600, तो 100 number तो आराम से निकल जाएगा. Got it? Even you can multiply below that number also. Rather than having 100, you can multiply even with 10. So minus 50 by 13 and 60 by 13. Then also you can find out. So that is what you need to see when it is a negative and positive number. One number is negative, one number is positive. You need to first check whether you need to multiply this at all or not. But आपको ये तो देखना ही पड़ेगा जो make the denominators equal, otherwise you cannot compare two fractions. So these steps you need to remember. In parallel, you need to remember about these two examples with negative and positive numbers as the lower and upper boundary. Got it? So this is a very, very important question. Most of the times it comes in your board exam. So if you remember and follow these tricks, there is nothing, difficult to solve this kind of problem. Okay. So if you have liked this video, please click on the like button. And if you like to have this kind of video again and again, please subscribe my YouTube channel Debs Learning Hub and follow my Facebook page to Debs Learning Hub. Thank you very much.